हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विद रिगार्ड टू केमिस्ट्री गेस्ट पेपर और वी कैन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th. So we have approximately 11 chapters. So I'll give you the important questions chapter wise. So we have number 1, unit first. What are the important questions in unit first is laws of chemical combination, laws of chemical combination and mole concept. In unit second, the important questions are Bohr's model of atom, Bohr's model of atom, Heisenberg's uncertainty principle, Heisenberg's uncertainty principle. Then we have de Broglie relationship, de Broglie relationship. Then orbitals and electronic configuration, electronic configuration rules. इनमें आते हैं आपके अहबा प्रिंसिपल आता है, पालीस प्रिंसिपल आता है या हंड्स रूल आता है. ये 3 रूल्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स में आते हैं. एंड इन यूनिट थर्ड वी आर हैविंग रेडिए, चाहे वो एटॉमिक रेडिए है या फिर आयनिक रेडिए. वी हैव आयोनाइजेशन एनर्जी, वी हैव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Examiner can ask about any one of these. Number unit 4th जो हमारे पास है that is hybridization, chemical bonding में hybridization, resonance, Vesper theory and hydrogen bond. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन यूनिट 4th दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. एंड नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट 5th. यूनिट 5th में हमारे पास है गैस लॉज दैट इज द गैसियस स्टेट. गैस लॉज जिसमें आते हैं बॉयलर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन आती है, आइडियल गैस इक्वेशन. इन यूनिट 6th we are having internal energy concept, that is the thermodynamics, internal energy, enthalpy, या फिर entropy, इनका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. then we are having Gibbs free energy, that is G. इसके अलावा हमारे पास लॉज है, वो इम्पोर्टेंट है. लॉज में आएगा आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड देयर इज वन मोर लॉ दैट इज कॉल्ड हेसिस लॉ. these are the definitions, you have to remember them, and laws आपको याद रखने हैं, उनके statements, and Hess's law is very important as far as thermodynamics is concerned. Then in unit 7th we are having a law of chemical equilibrium. This is in law of chemical, this is in chemical equilibrium chapter. law of chemical equilibrium क्या होता है? Layer's principle, Layer's principle एक important principle है. then we are having buffer solution किसे कहते हैं, and finally we have the concept of pH. ये 4 questions आपको याद रखने हैं in chemical equilibrium chapter. Then in chapter 8th, in unit 8th, we are having hydrides and heavy water.
दिस इज इन हाइड्रोजन चैप्टर एक्चुअली। इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस जो है यूनिट 11th रेडॉक्स रिएक्शन में आप याद करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इन नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ द यूनिट 10th दैट इज़ अबाउट ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़। ये आप याद रखेंगे, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ मतलब एटॉमिक रेडियम में क्या होता है अलॉन्ग पीरियड डाउन द ग्रुप एज फार एज ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इज कंसर्न्ड, तो वो आप याद रखेंगे। या फिर आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कर लेना, सोडियम कार्बोनेट आप कर लेना। देन यू आर हैविंग डाइबोरेन B2H6 पी ब्लॉक में आप याद करना, दैट इज़ यूनिट 11th। डाइबोरेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैनना बॉन्डिंग इसमें होती है, और इसमें बोरेक्स भी आप करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डाइबोरेन एंड बोरेक्स एज फार एज P block is concerned. In S block you have to remember sodium, you have to remember the properties and preparation of sodium hydroxide and sodium carbonate, and there are strengths and properties also. In next unit X11 that is organic chemistry, we are having effects आपको याद रखने हैं। इफेक्ट में आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट भी, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये सारे इफेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एंड वी आर हैविंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, में कार्बोकैटायंस क्या होते हैं, कार्बेन के फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड देन वी आर हैविंग वन मोर यूनिट दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन्स, इन विच आपको पता होना चाहिए मार्कोनिकॉफ्स रूल किसे कहते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, सेड्ज़ेफ रूल कहाँ अप्लाई होता है, या फिर जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से एरोमेटिक कंपाउंड्स आप पढ़ लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड टू द क्लास 11th। ये अगर आप करेंगे, आई गारंटी यू दैट यू कैन होपफुली क्वालिफाई विद गुड मार्क्स। सो आई विल बेसिकली शो यू यूनिट फर्स्ट इज बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, आपके पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, मोल कॉन्सेप्ट है। यूनिट सेकंड आप कर लेना जिसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर्स मॉडल, हिसेनबर्गस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्लॉक रिलेशनशिप, ऑर्बिटल्स, and there is electronic configuration rules also, which are these: Ahbab principle, Pauli's principle, Hund's rule, atomic radii, ionic radii पढ़ेंगे, ionization energy क्या होती है, electron affinity क्या होती है, electronegativity क्या होती है, and then we have in chemical bonding, hybridization, resonance, Vesper theory, and hydrogen bond. In gaseous state we have gas laws, Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law, and we have ideal gas equation also. In thermodynamics we are having internal energy concept, entropy, enthalpy, Gibbs free energy, and we have laws of thermodynamics जिसमें first law, second law, third law आता है, and we have one more law that is the Hiss's law. Then we have Lecher-Layer's principle in chemical equilibrium, law of chemical equilibrium also, buffer solution and pH. In next unit that is the hydrogen में आप हाइड्राइड्स पढ़ेंगे और हैवी वाटर पढ़ना है आपको। इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, उनका डेफिनेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर आप डिटरमाइन कैसे करते हैं। एंड नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे इन एस ब्लॉक। इन पी ब्लॉक आप डाइबोरेन पढ़ेंगे और बोरेक्स पढ़ेंगे, उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है इफेक्ट्स, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ने हैं आपको जिसमें आते हैं कार्बोकैटायंस, कार्बेनियंस एंड फ्री रेडिकल्स। एंड लास्टली इन ऑर्गेनिक इन हाइड्रोकार्बन चैप्टर you have to basically study the Markovnikov's rule for the HBr addition to alkenes, Sedgwick rule for the formation of alkenes, and aromatic compounds also, that is the benzene. ये चीज़ें आपको पढ़नी है। This was all about the guest paper or important questions in for class 11th. Subscribe channel to get more updates. Thank you.